Hi, good morning, everyone. This is Roshan Bhondekar joining from Spain, along with Mr. Kumaresh Misra, who is an international servant and IS officer, served more than 35 years in civil services, internationally and also nationally. Currently, he hold a position of director of Indian Chemical Council, and also he is a part of a team who won a Nobel Peace Prize winner in 2013. He also served United Nations as a Deputy Secretary General for Habitat, that department, and also running some different initiatives to support our society and help youth to grow faster and also educate our people as well. So join with me to welcome Mr. Kumaresh Mishra. Sir, welcome on Transcontinental Times 360-degree live show. It's our honor and privilege to have you on this show to talk about the current ongoing activities and the initiatives, and also your story, which can inspire so many youths across India and also international level. So I would love to be part of this discussion with you. Welcome, Mr. Sir. Thank you. Thank you. Yeah, Thank you. sir. So just wanted to ask, as you started the IS services around 1977, and during that time, 1980s time, mostly people are having a limited resources, like internet was not there. Then also transportation issues was there, and the having a if you talk about electricity, so many challenges were there, right, in 1980s. So joining the Indian IS, that's Indian Administrative Services, what was your inspiration, and how you motivated yourself to serve a society during that time? So if you could elaborate on that, and also add some personal challenges which you have gone through, it will be great for our audience to understand. Thank you, Roshanji. It's great to be on this show and talking to your audience and to you. Uh, as we were talking informally before the start of the show, many things in my life has not been because of design. Many times it has been an accident, an inspiration, or something happened. And in my school, I didn't want to be a civil servant. I want to be a doctor. I wanted to be a doctor. But my inspiration again to be a doctor was not just to learn something, but it was more that I will serve people. And I had these fancy ideas that once I become a doctor, I will have twice I'll practice. Part will be for free patients and part will be for paid patients. So service was primary in that. I come from Bihar, born in Patna. Now, Bihar is a state which is just amazing. Of course, it's often seen as predominantly agricultural. A lot of Biharis move outside of Bihar to work outside. They have been going in for from ages and maybe centuries. Um, but one of the key things of Bihar is that it's a place where three religious leaders were born or started their religion. And there is only one other place in the Middle East like that. So Bihar is very special. Uh, but it so happened that I moved on. I joined the college in Delhi. Then again, I always wanted to be independent because I thought that you can serve only properly with your full might when you are independent. You are not fettered by any service rules and things like that. So when I was at college, I wanted to be a lawyer. I wanted to be free. And then it so happened I got an opportunity to take admission in one of the best management institutions. It's still regarded as one in Ahmedabad, Indian Institute of Management, Ahmedabad. Then I said, "Oh, now I can't be an independent lawyer. I'll become an independent businessman." That's third. Now, as I told you, that I come from Bihar. Now, in Bihar, the most, if you are in Mumbai or maybe Ahmedabad, the more respected people are those who are successful businessmen, top executives, and others. In Bihar, who are the most respected people? It's the district collector,
an IS officer who has authority, who does things. So that was an attraction. So I appeared for it, and well, by God's grace, came into it. And I also got my home state of Bihar to work in, and which I was very privileged to sort of work in that state. So those were challenging times, very challenging times. And I said that after doing my management from Ahmedabad, and it was a rarity that anybody would join. Very few from IIM Ahmedabad or any other of the management institutions would join the government. But having joined over there, I said I must utilize the skills that I learned, my management skills and others, to serve the people that I work for. So that's how I came in. Of course, there was a lot. One, of course, basic thing is that you have to put in hard work, Absolutely. and So, just let me go. And it's continuous work. yeah. And in school, one of my very inspiring things from my father as well, or even from Gita, that even I used to read in school, was karmanneva adhikaraste ma phaleshu kadachan. Doing your duties in your command. Don't wait for results. So that was one policy that I followed all three, that you do your duty, do your best, forget about the results. So results kept coming. Yes. Yes, sir. You It's have a question it's for me? yeah, it's indeed great to know that you are having the higher education from top business schools across international level, right? So IIM is one of the top tier business school in India, and also I seen that you have done your masters in Boston University. So it's very rare, very rare to find that the people who are serving in civil department, right, the IS, IPS, are coming from business schools, coming from international universities and serving in India, right? So it's really having the wider impact on people to understand the challenges on the ground, right? So that's it's really great to know that the people like you are serving India, and who serve still doing a great work for Indian companies to take them to the next level. So just another question, sir. During that 1980s, I must say that there must be the political and also bureaucrat challenge, right? So for example, during that time, very few people, right? So coming and joining IS and IPS services. That is what we can say the civil services, right? So during that time, what was your the main objective if you join civil services? What was you aiming for? As you mentioned, you just aiming for to do your duty and serve what you can do best for, right? But without vision, we cannot drive our mission and drive your goal, right? So during 1980s, what you was expecting in next 3 years to become and serve to society? So if you could share some points about that, it will be great. No, that was after beginning in the 80s. Yeah. We had, of course, a lot of challenges were there, and it was the poverty level was still in India above 30, 35, 40%. So huge level of poverty. And when you start your career in the civil service, you don't start from big cities. You start with small towns. Like I started my first position that you get after your training was Samastipur in Bihar, which is predominantly agriculture. Then, of course, I moved to Jamshedpur as sub-divisional officer, which was the most industrialized of any districts of undivided Bihar at that time. We had Telco over there producing Tata trucks. We had Tisco producing iron steel and whole host of other factories. But yet it was amazing that just outside, 15, 20 kilometers from outside of that Jamshedpur, which was almost like a mini India, people were very, very poor. The roads were not there. The conditions were very poor. There wasn't enough work. There wasn't enough food. So a lot of programs were added. The rural development programs were initiated, both in terms of labor work, in terms of asset transfer, that people can get some asset and do some work and earn that money. So it was a great privilege, actually, and it was a matter of great satisfaction that you were doing something. Even a small thing like that. I think the government at that time, it's a tribal area. When I was in as a deputy commissioner, when I went in
1985 to Singhbhum, where again Jamshedpur was subdivision, and this bordered Orissa. And one of the things at that time, and it's most of the tribal areas, is they have the weekly hearts over there in villages where they come and sell and things like that. And at that time, the government started a program of what mobile shops they called Chalanti Dukans. Mhm. And we were sending, some of the only thing the tribals really needed at that time was, apart from some clothes, kerosene oil was very essential. So that they needed for the light. Then they needed salt. Mhm. Now, if they went to the heart directly, whatever way the kerosene oil was procured because it was not available in open market, so the cost would be double than what they should get through the ration shops, through the public distribution system. So when I felt that if I send these kerosene oil, or I send these what at that time was called janta dhoti and saris, and it's sold in the market, I almost immediately double up the income or the purchasing capacity of a tribal coming to the heart. Wow. If he comes to the heart, he buys 2 liters of kerosene oil, and if he buys from a private guy, he has to pay 8 rupees. And Oh, if the store is there, he buys at 2 rupees a liter, so 4 rupees. He immediately saves 4 rupees extra. yeah. So that way, I'm without doing anything but just ensuring that he gets the things at the price that he should be getting. I'm increasing his purchasing capacity. I'm increasing his income. So we were doing so. And of course, I had a lot of time to experiment because even the infrastructure for schools and others at that time were not that high. And of course, we have been talking about public-private partnership. Yeah. This public-private partnership for building quality schools, etc. We started doing it in the district of in Singhbhum. Of course, now Singhbhum is a 4-5 districts. It's all divided. So we got hold of Tata Iron and Steel Company. Mhm. And it's strange, normally we go to a private sector saying that please give the money and build this for us. I went to them that look, I have the money. I get the budget from the government to build a school. But somehow I cannot build it because my staff, they are not trained, or their motivation is not there, or whatever. So I give you the money. Mhm. Please construct it for me. Your private sector management is much faster. Mhm. You'll stick to the schedule. Your cost will be controlled, and you'll do a quality job. And now, if you do wish to add something to improve the quality, add from your side, but just deliver the things in time. Wow. So that was a huge kind of a thing where we included Tata and Steel Company. I reached out even to telcos, and they were doing not only school buildings, they were doing check dams and others. I even included, we had ACC Cement, all of them. Mhm. So it was, one of the earlier experiments of public-private partnership in the district. Of course, I think I was breaking a bit of a rule because it didn't allow me. But I said, so long as my intentions are genuine, so long as I deliver the results, Mhm. so long as the infrastructure are quality infrastructure, I think I'll be safe. And that's what we did. So I started a number of these such experiments also in terms of the district. And I think the basic thing was not so much that it was the sheer satisfaction Mhm. that you were talking to them. Mhm. And mind you, as a matter of fact, it's very interesting. Singhu is a very I don't know if you've heard of Birsa Munda. He's treated as Bhagwan Birsa Munda Yeah, sir. I because heard. he was one of the persons who started Mhm. agitation against the British when Mhm. they were Mhm. coming in Singhbhum and other places. Yeah. And ultimately, those people fought so much that in 1832 they entered into an agreement with the British called the Wilkinson's Rules. Wow. So they had a special arrangement with the British, which recognized the traditional headmen of the village. They were Mhm. called Bankis and Mundas. Their headmen, and they would carry out some judicial functions, some revenue functions, and things like that. But when India became independent, post independence, the Panchayati Raj system came in. So the Manki Mundas, who were the traditional heads, who Mhm. didn't want to go through a process of getting elected, so they Mhm. felt marginalized. Mhm.
So there was a huge conflict actually when I mid 80s. There was severe conflict, and a lot of these policemen were attacked with bows and arrows and things like that. Mhm. And I tried to reach out to them. Mhm. And the tribals there, it's very the psychology of tribals is they don't speak much. Yeah. They'll remain quiet. If they have a grievance, they'll still remain quiet. Wow. But sometimes it boils up, and then it is violence. So what I decided to do is reach out to them. I was speaking to them in their language. Connect. So they felt here was a collector, here was a district officer who's trying to speak in my language. And something that I learned became very handy when I had to get a prime minister to speak in Hindi from Bedford, and he didn't know Hindi. So interestingly, most of my friends are from Bihar, and I'm fortunate to to have people from that state. That is one kind of one region from our India, and I feel most people from Bihar are passionate, right? So in my life, entire life, right, almost 33 years, I during engineering college, during my IIM studies, I'm also part of IIM Ahmedabad. I did MDP program from there. So we are a college mate right now. So I feel again, more fortunate and more proud. So I see that there is a always, they are always hungry to achieve something, right? So mostly the mostly civil servants are coming from Bihar. If you talk about our entire case study in India, and engineering also, the people joining from Bihar, entrepreneurs coming from Bihar. So what is the main the reason behind this? Means why the people are so much passionate? Is there any some specific reason behind it? What is your experience on that? One, of course, the need for it. You know, Absolutely. you can't survive in Bihar, or you can't grow up. Yeah. So education is a must Yeah. for any investment that you do or your parents can do. Uh-huh. The best return comes from education. Absolutely. Agree. So, so the parents in Bihar, even if they are from agriculture or others, they're very Mhm. passionate that their children should get educated. They're very Great. keen that they should get educated. And they are willing, if Bihar does not offer engineering colleges, they'll send it to anywhere in the country to get them educated. So education is a passion, both in terms of the parents and what the students themselves inculcate. Yeah. They also see that if they do not study and perform, Mhm. they will go nowhere. Absolutely. Agree. So there is a need, there is a background, there is a family kind of a pressure, and there is an ideal. So that's why I think they are so much keen. But Mhm. again, the opportunities are limited in Bihar. They have always been limited, since independent. It's primarily agriculture. There are lots of discussions on this, why it's that backward and things like that. But whatever that might be. So ultimately, then what they find is that they're moving out of Bihar for most of the non-agricultural work. Amazing. Yes, sir. I'm agree with that. During my polytechnic, when I done diploma from Vivekananda Polytechnic nearby Tumsar. Tumsar is one a small town in Maharashtra. Whereas we have one polytechnic college, and that polytechnic college produce the mostly engineers joining from Maharashtra, Bihar, and Jharkhand, and some different rural states, right? So I see mostly my friends, those are joining Indian Railways, joining civil services. During that time, they are having a passion. They are doing engineering for working for railways, for working for civil services and all. So you rightly said there is the difficult time, to give the opportunity to make yourself more confident and more passionate to achieve some kind of goal. So I feel that is what all Biharis, even those are all Indians, our brothers. So they are doing amazing work, and they are doing amazing work for country. So sir, indeed, in addition of that, right? So as I seen your profile, you served prime minister office almost, and worked with three prime ministers from different parties and all, right? So sir, during that time, do you want to share something? What was the challenging situation, and which was the biggest the difficult prime minister as you worked with, and what was that situation as in a general note? No, actually, when you work in the prime minister's office, you Mhm. are part of the prime minister's setup. Absolutely. So once you are part of the prime minister's setup, Mhm. you are helping the prime minister to perform. Absolutely. You are analyzing the issues that come before you. Yeah. And one
very thing is that as an officer in the Prime Minister's office, Mhm. you are dispassionate. Your Mhm. commitment is only to Prime Minister's best judgment or help him to take the best judgment that is possible. So your work is to analyze the issues, give the pros and cons, and give the alternatives. Mhm. You don't even push a decision. You give the alternative because it's the Prime Minister's prerogative to take a decision. And to that extent, no Prime Minister sort of doubts you or anything like that, and you do your best. Mhm. And it's a very interesting anecdote, of the three Prime Minister, the shortest term was of Vajpayee ji, Ashpeji, when yeah. was his 13-day government. Mhm. And so he came in and we started off and things like that. And he was gracious when after 13 days, and I think the speech that he gave in Parliament for Mhm. the no confidence motion after which he resigned Mhm. is still perhaps, because I was hearing it live, is still perhaps one of the best parliamentary speeches that Mhm. a Prime Minister has given. And so next day, of course, that was in the evening and he resigned. So next day we gave a small farewell to him. That was in the Prime Minister's office in the meeting room. And it was very interesting, his observation, which I think truly, in a way, summarizes what the Prime Minister's office does and how the officers who work in the Prime Minister's office perform. Mhm. He said that हम लोग जब बाहर में थे तो ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है. लेकिन आप लोगों की जो जो भी विश्लेषण आए, फाइलें आई, Mhm. उससे लगा कि नहीं, आप लोग बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं Mhm. और अपना सुझाव देते हैं, प्रस्ताव देते हैं और निर्णय लेना हमारा काम. Mhm. So that was amazing that in 13 days' time, he said that, from their earlier impression from outside that it's the dirty tricks department of the Prime Minister, to seeing that, and all the staff and officers of the Prime Minister's office are essentially professionals for trying to help the Prime Minister to perform even better with all the information, alternatives, and everything. So that is that's the most amazing thing. So that's what it does, and it and I must confess that the Prime Minister's office is perhaps the most efficient office amongst all other ministries that I worked for. Great, sir. It is an amazingly, and the methodologies are also so different Great. because everything has to be decided fast, quick. You don't have any time. So no, it's an amazing. It was an amazing opportunity to work. Sir, that is amazing. I think you shared a valuable experience as you having a experience with Honorable Atal Bihari Vajpayee, our ex Prime Minister of India. Apart from that, let me switch on Hindi. Okay, अभी काफी इंग्लिश हो गई. तो मुझे लगता है कि जिस तरह से politicians, so Prime Minister obviously is a supreme of our system, whereas the person is joining and coming from the election system and people are electing him for doing a justice for society. तो आपको ऐसा लगता है कभी कि जिस तरह से पॉलिटिशियंस हो, इवन सीएम पीएम, दे आर मिसयूजिंग पावर? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बिकॉज द पीपल ज्वाइनिंग फ्रॉम big management school, big business schools, having a wider experience, but they are not properly utilized. नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है. मैंने जैसे कहा कि एक चीज हमें समझना चाहिए कि Hmm. जो हम लोग सरकारी सेवक हैं, Hmm. हम लोग एक दायरे में काम करते हैं. हम लोग नियमों के अधीन काम करते हैं. Hmm. हम लोग पूर्वोदाहरण को देखते हैं. अच्छा, इसका प्रेसिडेंट है कि नहीं, पूर्व में ऐसा हुआ है कि नहीं. तो मैं सामान्यतः कहता हूं कि सिविल सर्वेंट जो है वह पीछे देखता रहता है. अरे पहले हुआ है कि नहीं, अच्छा पहले कैसे हुआ था, कैसे निर्णय हुआ था. लेकिन अधिकांशतः जो राजनीतिज्ञ हैं वो आगे देखते रहते हैं. अच्छा, मैं क्या करूं, अच्छा ये लोग मेरे पास आते हैं, वो कैसे मैं करूं, मैं क्या करूं कि ये मेरे मेरे पक्ष में रहेंगे, मैं क्या करूं कि मुझे उनकी मतलब
वो हमें अच्छा मानेंगे। तो एक भविष्य को देखने और भविष्य के लिए कुछ करने की जो मैं कहूँ जो विचार करने की जो प्रक्रिया है, वो कहीं भी सिविल सर्वेंट से ज्यादा पॉलिटिशियंस में है। और ये मैं केवल ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूं। मैंने तो ये भी देखा कि जब मैं सब डिवीजन में भी काम कर रहा था या ब्लॉक स्तर पर भी काम करता था, तो उन लोगों में जो उनसे जो सुझाव या प्रस्ताव आता था, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता था कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा, डीसी साहब कैसे ये कर सकते हैं, डीसी साहब कैसे कर सकते हैं, ये जो, तो इट वाज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव। एक रहता था सुझाव कि इसको कैसे हम प्राप्त करें। वह जो है सो सिविल सर्वेंट का रहता है, अच्छा हमको नियम में है ये, मेरे जो है टारगेट्स हैं ये हैं, हम उसी के अंतर्गत काम करेंगे। तो मेरा जो अपना जो अनुभव रहा है, उस अनुभव में मुझे यह लगता है कि जो भी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे काफी साथ काम करने का मौका भी अच्छा भी मिलता है। दूसरा यह भी है कि जब भी अब हम सिविल सर्वेंट काम करते हैं ना, पॉलिटिशियंस भी हमेशा हमें जज करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि यह निजी स्वार्थ में काम कर रहा है, अपने लिए केवल काम कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, या यह भी हमेशा जनता की बेनिफिट के लिए काम करता रहता है। Absolutely. और अगर उनको लगा कि आप सचमुच में, मतलब आपका कोई व्यक्तिगत उसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं है, आप सचमुच में जन सेवा से प्रेरित होकर के यह काम कर रहे हो, मतलब सही निर्णय ले रहे हो, शायद अनपॉपुलर डिसीजन भी ले रहे हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। एक बार ऐसी जमशेदपुर में हुआ था, एक नए नए मुख्यमंत्री आए बिहार में। उस जमाने अनडिवाइडेड बिहार में सिंहभूम जिला को बहुत ही क्या कहे आकर्षक जिला माना जाता था, क्योंकि वह बहुत रिच था, बहुत माइंस थे, बहुत फैक्ट्रियां थी, ये सब था। हमारे मुख्यमंत्री बदले, नए मुख्यमंत्री आए। खैर, जब वो हमें भेज भी रहे थे तो मैंने अपनी अनिच्छा जताई थी कि मैं नहीं जाना चाहता हूं कुछ व्यक्तिगत कारणों से। तो उन्होंने कहा कि आप अजीब हैं, आपके मित्र भी आकर के हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे वो जिला में पोस्टिंग कर दीजिए, और आप आकर के मुझे कह रहे हो कि भाई वहां मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है, कुछ पारिवारिक कारण है, हमारी माँ नहीं चाहती है कि मैं पटना से बाहर जाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी माँ को समझा दूंगा। मैं गया। खैर, फिर कुछ लोगों ने उनको ये कहना शुरू किया कि कुछ कहा होगा, तो मुझे सुनने में बात आई कि वो मेरा स्थानांतरण करना चाहते हैं। वैसे स्थानांतरण से मुझे कोई वो था नहीं, मतलब कोई मैं सब जगह 2 सूटकेस लेके तैयार रहता था, स्थानांतरित करना है कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, क्योंकि ये हो रहा था कि उस समय कुछ एजिटेशन हो रहे थे। वो जगह जगह वो जो भी फैक्ट्री वाले थे, कुछ उनसे उगाही कर रहे थे, नहीं देते थे, उनके बाहर धरना दे देते थे, उनको जूते की माला पहना देते थे, ये कर देते थे। तो मैं पटना गया और मैंने मुख्यमंत्री से मिला। हमने कहा कि देखिए, मैंने सुना कि आप स्थानांतरित करने वाले हैं, मुझे कोई निजी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उस जगह में, लेकिन ये आप जरूर देखें कि वहां पर मैंने जो कार्य किया है, या जो इस तरह के एजिटेटर्स हैं उनको हटाया है, या पुलिस बल का प्रयोग किया है, वह इसलिए किया है कि वहां पर प्रोडक्शन रुक रहा था, प्रोडक्शन बाधित हो रहा था। तो वो एक मजदूर नेता थे हमारे मुख्यमंत्री उन दिनों। उन्होंने कहा कि अरे प्रोडक्शन रुक रहा था। हमने कहा हाँ, प्रोडक्शन रुक रहा था, पता लगा लीजिए। मैंने तो जो गेट पर बैठ करके आवाजाही बंद कर रहे थे, सामान नहीं आने देते थे, निकलने नहीं देते थे, मैंने उसके लिए कार्रवाई की है। तब उन्होंने कहा, तब जाने दीजिए, रहने दीजिए उन लोगों को जेल में। And that was the end of my any proposal to transfer me from there. तो Actually, मतलब उनका अगर आपके प्रति विश्वास होगा कि आप सच्चे मन से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत। it is great, Yeah. great to hear that experience, sir. Sir, I also seen there are some promising IS officers across India. Let me name them, right? So one is a person, he's a Tukaram Munde. He's very promising and very dashing IS officer. Might be he can watch our interaction.
So I just wanted to share what he's doing, right? So he's not afraid about any political parties. He's doing what he need. He support and execute his policies for the society. He don't care about what politician thinks about or not. There are another side. There are some IPS officers, especially from Maharashtra, and the person name is Vishwas Nagri Patil. Another lady is Rashmi Shukla. She's now in a very hot news in Maharashtra. There are so many IPS officers, getting transferred here and there because of some political influence and all. So during that time, while considering this situation, these kind of honest officers are not afraid about any CM, any PM. Doesn't matter who's joining from any party or not. Do you think these kind of officers has to be treated badly from government, and also and also create a much pressure on their family to execute what political parties want? So that is, I think, that is the biggest threat or biggest failure from a government system. I think so. And being an IS officer, how you think about and how you see this problem can be fixed? नहीं, इसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा व्यावहारिक होने की आवश्यकता है। हाँ। व्यावहारिक होने की आवश्यकता है, शालीन होने की आवश्यकता है, और स्थिर मन से मजबूत रहने की भी आवश्यकता है। तो यह है कि हम जो कर रहे हैं या जो हम सही मानते हैं, उसको हम शालीनता से भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है इसमें है कि आपको बराबर निष्पक्ष रहना, निष्पक्षता एवं जो आपका जो कर्तव्य है उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखना सबसे बड़ी चीज है। हम तो राजनीति में है नहीं, मुझे किसी को ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। तो इसलिए जो मेरे सामने आता है और उसको निष्ठापूर्वक करते हैं, और हम शालीनता से करते हैं। हम पुलिस पदाधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, ना हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम तो बस दूध का दूध, पानी का पानी करके बता देते हैं ये स्थिति है। और अगर आप वो करोगे तो आपको यदि कहीं स्थानांतरित करते हैं, कहीं करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप तैयार हो जाने के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। इसलिए अगर आप वो जो है ना, वो अगेन मैंने जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और योगा का जो मतलब गीता का जो ये है कि आप निष्प्रिय रहो, मतलब लगाव मत रखो। ये मत सोचो कि मैंने सिविल सर्विस में या फलान पर ये काम कर दिया तो उसका मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ रिवॉर्ड नहीं है। उस कर्म को करना, अपनी ड्यूटी पूरा करना, वही रिवॉर्ड है। इसलिए अगर वो रिवॉर्ड के प्रति आप समर्पित हो, वही आपका फल है, वही सेटिस्फैक्शन है। वेदर आपको जो है सो फलाने राजनीति दल आपको यहाँ डाल देता है, वहां डाल देता है, उसमें नहीं रहोगे, आप सुखी रहोगे, आप ज्यादा अच्छा करोगे, आपका पारिवारिक जीवन भी ज्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जहां सोचोगे कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, अरे मैंने इतना काम कर गया तो मुझे वहां का फल मिलना चाहिए, अगर आपको लोग देखेंगे कि आप सही तरह से काम करते हो, अच्छे ढंग से काम करते हो, तो बहुत बार ऐसा मौका रहता है जहां पर खास करके राजनेता वैसे ही लोगों को ढूंढते हैं जिसके प्रति सभी का विश्वास हो, जिसको मानते हैं कि ये व्यक्ति निष्पक्ष है। तो ये एक सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल रहने के लिए या अपनी व्यक्तिगत शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड सर। सर इसमें एक मुझे प्रॉब्लम लगता है कि मैं अभी कुछ आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट में रेगुलरली रहता हूँ, and I always discuss the problems, right? How they are going through difficult challenges, कैसे प्राइम मिनिस्टर, कैसे सीएम का प्रेशर है, and they are not supposed to do something, right, which cannot be benefited for political party. एग्जाम्पल लेते हैं, संजीव भट्ट हमारे आईपीएस ऑफिसर थे इंडिया में। आप सभी लोगों को पता होगा, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। बहुत से अच्छा आईपीएस ऑफिसर्स है जो अच्छा काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट टाइम्स को ऐसा लगता है कि जो इस तरह से पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में जो सिचुएशन आई है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स काफी प्रेशर के थ्रू जा रहे हैं। मैंने रिसेंटली न्यूज सुनी, कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया,
कुछ आईएएस ऑफिसर्स उतने सेटिस्फाइड नहीं है आफ्टर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज, राइट? तो ये चीजें काफी सीरियस है। अगर आप थोड़ा अगर इस चीज को अगर एक आईएएस एसोसिएशन के थ्रू सोचते हो, तो इसके लिए हमें लगता है कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। इवन वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। बट अल्टीमेटली क्या होता है सर, जब आप पीएमओ के अंडर में काम करते हो तो पीएम का एक अलग प्रेशर होता है, दे आर हैविंग देयर डिफरेंट एजेंडास, राइट? तो उसमें ऐसा होता है अगर 10 पीएमओ के अंडर में काम कर रहे हैं, एक पीएमओ ऑफिस के अंदर 10 आईएएस ऑफिसर्स है, तो 10 में से 5 लोग ऐसे रहेंगे जो जो उन एजेंडा के साथ में चलेंगे जो पीएम कहते हैं, और 5 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ये गलत है, राइट? तो उन 5 लोगों का क्या, जो 5 लोग अपोज करते हैं कि दिस पॉलिसी शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड विच कैन क्रिएट मैसिव सिचुएशन फॉर सोसाइटी, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? एक शॉर्ट में अगर बता दो आप, तो हम लोग। नहीं, मेनली उसमें हमने कहा ना कि आपका कर्तव्य है कि निष्पक्ष रूप से आप सही बातों को लिखो, कारण को लिखो, हाँ, और अगर अल्टीमेटली गवर्नमेंट का वही डिसीजन होता है तो आप इम्प्लीमेंट करते हो। कोई हाँ, गलत तरह से नहीं इम्प्लीमेंट, कोई गैर कानूनी काम आप नहीं कर, कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको गैर कानूनी काम करने से। और अगर बाध्य नहीं कर सकता गैर कानूनी काम से, तो आप उसमें से हट जा सकते हो। और कोई हमारा अपना तो कोई लगाव नहीं है, यही डिसीजन होना चाहिए। वो तो जो चुन करके आता है उसकी जिम्मेवारी है, वो कैसे करे। लेकिन आपके माध्यम से कम से कम आप इतना ही कर सकते हो कि आपके माध्यम से गलत काम ना हो और एब्सोल्युटली, गलत एब्सोल्युटली। तरीके से नहीं हो। तो मैं तो अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी निष्ठा के लिए जिम्मेवार हूं। मैं तो अब अगर मैं सिविल सर्विस में आया तो मैं समाज सुधारक बन करके नहीं आया, मैं एक सरकारी सेवा में आया हूँ। मेरे पास एक जिम्मेवारी दी हुई है, एक व्यवस्था बनी हुई है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, नियमों की व्यवस्था है, हमको उसके अंतर्गत काम करना है। एब्सोल्युटली। उसने हमको ना किसी से लड़ाई लड़नी है, अगर वैसा करना है तो आप उससे बाहर निकल करके फिर अपना जो काम करना है, जस्ट जहां तक अगर आप सिविल सर्वेंट हो उसी दायरे में रहो और उसी में निष्ठा पूर्वक काम करो। और उससे आप ज्यादा अच्छा हम समझते हैं कि आप डिस्पोजल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, शांति रहोगे और आपका कोई मत, और आपको ज्यादा आदर मिलेगा। एब्सोल्युटली आपको एग्री। आदर नेताओं का भी आदर मिलेगा, राजनीतिज्ञों का भी आदर मिलेगा, आपके मंत्री और मुख्यमंत्री का भी आदर मिलेगा कि यह व्यक्ति जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, जो कह रहा है वो व्यावहारिक होकर के जो उसकी जो उत्तरदायित्व है उसी के अनुरूप वो अपना सुझाव देता है या कार्य करता Agree, sir. Agree 100%, because we are, all officers and all civil servants are meant for work under some code of conduct, and that code of conduct is designed by democracy and some system. And I'm fully agree with that and supporting that matter. So, but I also have one serious concern. For example, let's say there are 10 IS officers in across India doing amazing work. During that time, if some injustice happened, right, some IS officers having going through some difficult time, let's say that some CMR putting a wrong claim for a corruption or something like that, and the case is not not a true or not real what political parties are claiming for. In that situation, for that IS officers or that IPS officers, can IS association and can IPS association jointly work together to support that team member? Because ultimately the association is a form of group, and that association can stand together to support their officers in such kind of allegations. So do you think this is what can be required, which is not happening since last some time in some cases? है। No, it's not that it's not happening. It is happening. But of course, as a group, as an association, you always say that the association is for group issues and not for individual issues. Absolutely. तो जो व्यक्तिगत आपके जो समस्याएं हैं वो व्यक्तिगत फिर आपको व्यक्तिगत तौर पर ही उसको निपटाना पड़ेगा। और जो सामूहिक चीजें हैं उसको सामूहिक रूप से एसोसिएशन ले सकता है। लेकिन अभी भी है जहां पर व्यक्तिगत वैसी अगर कहीं लगता है लोगों को अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, तो अगर सामूहिक रूप से कहें तो कई बार कहते भी हैं, न कहें तो व्यक्तिगत तौर पर भी लोग मदद करते हैं। भले एसोसिएशन में जानकारी आती है तो व्यक्तिगत तौर पर भी सहायता देने की, उसका मानसिक सपोर्ट करने की वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन है बहुत वो एक यथार्थ है कि अगर आपको कोई पीछे पड़ गया तो लड़ाई तो आपकी को लड़नी है।
दूसरा क्या होता है जो दूसरा हम लोगों के यहाँ भी नहीं है, जैसा आपने कहा कि निष्पक्ष जैसे है वो परेशान हो जाते हैं, कि अगर मेरे ऊपर अगर सरकार ने या किसी मामले में किसी ने फंसा ही दिया, कुछ कर दिया दबाव डालने के लिए, तो मेरे पास तो वकील को भी करने के पैसे नहीं रहते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब या आज आज की तारीख में जो अच्छे वकील हैं, उनकी उनकी इतनी ज्यादा मतलब ये है फीस वगैरह है कि आप अपने निजी साधन से, आप अपनी सैलरी से उनका फीस नहीं भर सकते। तो यूनाइटेड नेशंस में है, एंड आई होप कि हम मतलब सरकार में भी ऐसा हो। यूनाइटेड नेशंस में जैसे ओपीसीडब्ल्यू में थे, तो वहां पर आप जो एसोसिएशन में एक चंदा देते हो, उस एसोसिएशन में से अगर आपके खिलाफ कोई वैसा कार्रवाई होता है या आपके साथ अन्याय होता है, तो आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हो और वो इंश्योरेंस खरीदता है आपके लिए, और वो इंश्योरेंस खरीद करके आपको लॉयर का फीस भी देगा। वो व्यवस्था हमारे यहाँ भी नहीं है। ये आईएएस एसोसिएशन जो है, जो एक तरह से लीगल मतलब सभी लोगों से मेंबरशिप फी ले और उससे लीगल कवरेज खरीदे, और उस लीगल किसी के खिलाफ अन्याय होता है, कुछ होता है, और अगर देखता है मतलब उसको एग्जामिन करके कि नहीं वाकई आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उस लीगल इंश्योरेंस से आपको वो वकील मिलेगी। मैंने खुद लिया है, एक दो मामले में मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो मैं 2 मामले में गया अपने ओपीसीडब्ल्यू में ही अपने डीजी के निर्णय के खिलाफ। मुझे 2 बार $10,000 का कॉम्पनसेशन भी मिला। वाह, अमेजिंग। लेकिन उसमें जो वकील की जो फीस वगैरह थी हमको नहीं, बिकॉज मैं एसोसिएशन का मेंबर था और उस माध्यम से आई हैड द लीगल कवरेज। तो वो लीगल कवरेज की व्यवस्था मतलब इतनी बड़ी हमारी सिविल सर्विस है, इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम लोगों की अभी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ अगर इस तरह का होता है तो जो ऐसे अच्छे लोग जो फंस जाते हैं उनको उनको बड़ी सहायता मिलेगी। Good, sir. It's amazing, amazing value and the great answers which you have given right now. Sir, इसके अलावा आपने almost 30 years being IAS officer सर्व किया है दिल्ली और बिहार में. Apart from that, I also got to know that you was working for OPCW, Organization for Prohibition of Chemical Weapons. उसमें आपकी टीम ने नोबल पीस प्राइज विनर जीता है 2013 में. तो उसके बारे में अगर थोड़ा आप बताओगे हमारे ऑडियंस को कि उस इनिशिएटिव का क्या 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 ऑब्जेक्टिव था एंड व्हाट वाज योर रोल इन दैट, तो हमारे लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा और जानने के लिए. ये जो है तो ये क्या मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला था अवार्ड, ये और अवार्ड मिला था मेरी टीम, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को, ओपीसीडब्ल्यू को मिला था। और जितने भी उनके स्टाफ थे जिन्होंने ओपीसीडब्ल्यू के कार्यों में जो उन्होंने पृष्ठभूमि निभाई थी, उसके लिए वो रिकग्निशन था। तो उसमें 2-3 तरह के जो काम है ऑर्गेनाइजेशन, ओपीसीडब्ल्यू एक मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो बहुत अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, उसके बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं है। वह मूलतः वह केवल अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है और उसका हेडक्वार्टर्स हेग में है, नेदरलैंड्स में, वहां से काम करता है। लेकिन जो केमिकल वेपन्स को हटाने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है कि वो जाएंगे, जांच करेंगे, उसका जो केमिकल वेपन जिन देशों के पास था, जिन्होंने डिक्लेयर किया था, उसके डिस्ट्रक्शन का वो वेरीफाई करेंगे। तो वहां पर जो पॉलिसी है वो है ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम देशों को ट्रस्ट करते हैं कि आप केमिकल वेपन्स आपने डिक्लेयर कर दिया और आप ये भी कह रहे हो कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आप डिस्ट्रॉय कर भी रहे हो, उसकी समय सीमा बंधी हुई है, लेकिन ओपीसीडब्ल्यू जाकर के वेरीफाई भी करेगा। साथ ही उसके अलावा जो कई जगह जो है सो यह भी है, अभी भी है, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन बना हुआ है कैसे केमिकल्स होंगे, तो वो लोग कोई गलत केमिकल्स ना बना रहे हों उसकी भी जांच करते हैं। बाद में जब सीरिया में यह एलिगेशन आया कि बहुत सारे जो है वहां पर केमिकल वेपन्स भी यूज हो रहे हैं, तो उसकी एक टीम भी बनी जिसमें बहुत सहायता ओपीसीडब्ल्यू ने दिया ये पता लगाने के लिए कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सबने मिल करके कह दिया है कि ओपीसीडब्ल्यू मतलब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल गलत है।
तो इस तरह से, और मैं उसमें एक और दूसरा काम करता था, वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन ब्रांच। अंतरराष्ट्रीय एक तरह से जो केमिस्ट है, एनालिसिस के लिए कि कोई कोई गलत केमिकल्स है उसका कैसे एनालिसिस हो, क्या वो खराबी करता है, नहीं खराबी करता है, या फैक्ट्रीज हैं बहुत में एक्सीडेंट्स होते हैं, उस एक्सीडेंट्स बचाने के लिए कई बार है कि अनइंटेंडेड भी अगर केमिकल प्लांट बन रहा है, कोई वो नहीं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसमें, जैसे हमारे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो कैसे उन एक्सीडेंट्स को भी बचाया जा सके ताकि नुकसान कम से कम हो सके। ये अलग तरह की संस्था है, तो इसलिए इसका जो रोल रहा है एक खास तरह के वेपन्स के एलिमिनेशन में, उस रोल को उन्होंने यथार्थ के रूप में परिवर्तित किया है। आज तक इवन ईरान में जाकर के तो ये हो रहा है, जांच वगैरह हुआ था बीच में, लेकिन वेरिफिकेशन केमिकल वेपन्स का कहीं नहीं होता है। सिमिलरली बायोलॉजिकल वेपन्स का वेरिफिकेशन नहीं कहीं होता है। इसलिए जो है सो ये सब इसमें है, तो एक अलग तरह की संस्था है, इसलिए इसको रिकग्निशन मिला और 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला। Wow, sir, it's great to know that your efforts and your team was amazing, I think, and it was really proud for all our Indians, right? So they are watching this our show, and knowing a person like you is really the pleasure for having the more information about your work, and also the contribution for society, for international forum, and also national forum. So just for addition of that, just this information for all viewers, Mr. Kumaresh Sharma is also served as a Deputy Secretary General for United Nations. He was representing Ecuador as well, and also currently he's a Director of Indian Chemical Council. So in addition of that, what he served for 37 years, so these total 37 of service in a civil services, which includes international national services. It really inspires every youth to learn something out of it and understand the importance of the responsibility, the power of civil servant at a national and international level. So in addition of that, sir, just wanted to know कि आप अगर जो अभी हमारे इंडिया में काफी सारे यूथ है जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? मींस व्हाट इज योर मेन एडवाइस? कैसे वो लोग खुद को रेडी करें एंड किस तरह से अचीव करें? जैसे शॉर्ट में आप बताओगे तो वो हमें, हमारे ऑडियंस के लिए भी और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। हमेशा सीखते रहो, हर चीज से कुछ न कुछ सीखते रहो, बराबर पढ़ते रहो, उससे भी सीखते रहो। आईएएस या सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत रिसर्च किताबें पढ़ रहे हो, उसके बदले ये है कि विस्तृत ज्ञान आपके पास रहना चाहिए अधिकांश चीजों की, और केवल तैयारी के समय सोचोगे कि वो सारा ज्ञान हमको मिल जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हो, चाहे सिविल सर्विस में चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब सफल हूं, तो आप हमेशा पढ़ते रहो, देखते रहो, एक जिज्ञासु रहो, जीवन भर एक छात्र रहो। और अगर छात्र बने रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, और अगर वो सीखते रहोगे तो आपको ज्वाइन करना आसान हो जाएगा। अब यह उन लोगों के लिए काम नहीं आएगा जो कि बस अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछला 5 साल तो उस समय से नहीं दुनिया को देखा, ये नहीं देखा कि नहीं अगर हमारे यहाँ जो केवल एग्जाम के समय तैयारी करो, बाद में नहीं तैयारी करो, हमेशा करना पड़ता है। अगर अभी आप तैयारी भी कर रहे हो तो आप लगातार बने रहो तैयारी करने। ये ग्रेट सर, इस जो आपने कहा उसके मुताबिक मुझे एक बड़े व्यक्ति का जल्दी से दिमाग में नाम याद आ गया। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एप्पल के सीईओ थे। तो जो आप कह रहे हो कि वी हैव टू कीप अ लर्निंग डिजायर एंड दैट्स अ मैसेज आउट ऑफ इट, टू जॉइन एनी सिविल सर्विसेज, टू वर्क इन एनी एनवायरनमेंट, वी हैव टू कीप लर्निंग, not to think that we know everything and we are so in ultimate way what you're trying to say that don't settle down in a comfort zone, try to learn something out of it, be a student and
and that's the ultimate goal and and the message out of it. सर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी अगर आप देखो यूथ, अगर देखो थोड़ा, अगर पैटर्न ऑफ एक्टिविटी देखो, तो काफी सारा यूथ डिस्ट्रैक्ट हो चुका है. इंटरनेट काफी है, पीपल आर मिस यूजिंग फेसबुक, ट्विटर एंड सो मेनी डिफरेंट सोशल मीडियाज लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल. सो मुझे ऐसा लगता है कुछ जो यूथ है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं. तो उस डिस्ट्रैक्ट होने जो जो जिस तरह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं उनको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? कुछ लोग तो होते हैं ना, बोलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, आई वांटेड टू बिकम आईएएस, आई वांटेड टू बिकम आईपीएस. तो इस चीज एक कहावत है ना कि अगर आप कहते हो कुछ और करते हो कुछ अलग, राइट? तो वो चीज हो रही है अभी हमारे यूथ के साथ में. दे आर नॉट फोकस्ड एट ऑल. और जिस तरह से वो सोशल मीडिया के लाइफ में खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद की चीज, दे आर नॉट हैविंग दैट हंगर डिजायर, राइट? तो उस माइंडसेट को आप किस तरह से देखते हो? मींस व्हाट इज योर सॉल्यूशन इन वन लाइनर कि कैसे उसको जगाया जाए? बीइंग अ स्टूडेंट इज ऑलवेज देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट. नहीं, दूसरा ये भी है कि अपने जीवन को केवल दो पक्षों में, सक्सेस और फेलियर में मत देखो. या तो मैं सक्सेस हो गया या फेलियर हो गया. जो कहते हैं कि हमेशा अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर एक दूसरा दरवाजा खोल देता है, एक खिड़की बंद है तो दूसरी खिड़की खुल जाती है. ये हमेशा रखो कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी. एक काम आप कर पाए तो डिसहार्टन नहीं हो. बहुत लोगों को हमने देखा है जो एक चीज बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, सक्सेसफुल नहीं हुए, दूसरी जगह वो जाके बहुत सक्सेसफुल हुए. तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन खत्म हो गया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो नहीं. अगर आप लगे रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी. उस क्षेत्र में ना मिले दूसरे क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उससे आप जरूर सक्सेस आएगा. और पॉजिटिव रहना जो है कि नहीं ठीक होगा, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बी कि नहीं कुछ ना कुछ होगा, लगे रहो, तो आप जरूर उसमें एक मानसिक बल भी मिलेगा और आप सफल भी होगे. ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर. ईश्वर किसी को परमानेंटली कंडेम नहीं करता है. ग्रेट, गुड सर. अल्टीमेटली आप कहना चाह रहे हो कि फेल्यूर से ही हमें सीखना है, एंड फेल्यूर्स इज ऑलवेज गिविंग द पॉजिटिव सिग्नल टुवर्ड्स योर एम्बिशन एंड विजन, राइट? सो पॉसिबली अगर जो भी यूथ हमारे इस डिस्कशन को देख रहे हैं वो शायद इस चीज को समझ पाए कि फेल्यूर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. डोंट गेट disappointed with the situation. Keep trying, keep learning, and be foolish. That's what I actually and there is always an alternative. There is always an alternative. There is always another window. Absolutely. No door is permanently closed for you. Great, sir. That is indeed great to have your point on this, in a specific situation, and it's really pleasure of Transcontinental Times. So in addition that, sir, Transcontinental Times हमेशा try करेगा कि IPS ऑफिसर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, जो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हो जो अच्छा काम कर रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड, उनको हम लेके आए, लोगों तक पहुंचाए, एंड वो जो चीज साझा करे जो शायद न्यूज पे नहीं देखी जाती, न्यूज पे कोई एक्सपोज नहीं करता है उस चीजों को, राइट? तो हम आपका काफी धन्यवाद करते हैं, और it's really pleasure to have you on our Transcontinental Times discussion, and it was really pleasure, and it was really informative session for all our audience. We are very very thankful for your support and for your time, sir. It's indeed pleasure. Speak to you soon, and we'll be in touch on that. Thank you very much. Thank you, Roshan ji. All the best to you, and all your best to all your listeners. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Right. Thank you.